So this is my first video on which I'm kind of sitting in front of camera and trying to share my experience. I must say this is not easy, but yes, I will still try. In this video, we talk about my last trip to Malaysia that I took this year in July. It was, of course, a solo trip. So I have divided this video in three parts, and here is the part one, in which I talk about how I booked my flight tickets and where did I book my accommodation from, and how I got the visa for Malaysia. So and my researches that I had done before taking the flight. So let's get started with the flight booking. ओके सो टॉकिंग अबाउट फ़्लाइट बुकिंग, तो मैं काफ़ी टाइम से इसका जो फ़्लाइट्स फेयर है, एयर फेयर है, आई वाज ट्रैकिंग. तो जनरली मैं गूगल फ़्लाइट्स यूज़ करती हूँ और समटाइम्स मैं स्काई स्कैनर भी यूज़ करती हूँ. तो जिस पे मैं ट्रैक करती हूँ कि जिस जगह पे मुझे जाना है, जो भी मेरा डिज़ायरेबल लोकेशन है, उसका क्या चल रहा है, टिकट्स और डिस्काउंट्स क्या है, क्या मतलब ऑल दोज थिंग्स. एंड इट वॉज़ रियली चीप जब मैंने स्टार्ट किया था इसको सर्च करना जुलाई के शुरुआत में. सो इट वॉज़ अराउंड 12,000 रिटर्न फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू कोलालमपुर एंड कोलालमपुर टू कोलकाता. But at that time, COVID situation was not that easy going in my area, Siliguri, where I stay as of now in West Bengal. So I was a bit skeptical about it and did not book until it went till 16,000. So when it was around 16,000 return flight airfare, so I thought, okay, now it's time, I should book it right now, otherwise it's gonna get even more expensive. तो दैट्स व्हेन आई बुक्ड. तो मेरे को 16,000 का पड़ा इसका टोटल एयर फेयर, कोलकाता टू कोलालमपुर एंड कोलालमपुर टू कोलकाता. And if you search for flights for any other major cities in India like Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Delhi, so I have noticed कि फ़्लाइट का जो फेयर है टिल कोलालमपुर तक का, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. आपको 15 से लेके 18,000 तक में आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हो, या प्रॉबेबली आप इस पर अलर्ट ऑन कर सकते हो जो अवेलेबल है ऑन स्काई स्कैनर एंड गूगल फ्लाइट में भी है. तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब उसका फ़्लाइट थोड़ा कम हो रहा है, फ़्लाइट का फेयर थोड़ा कम है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, तो तब आप बुक कर सकते हो. सो आपको अराउंड 18,000 में आपको मिल सकता है कोई भी मेजर सिटी से कोलालमपुर तक का फ़्लाइट. सो नेक्स्ट कमिंग टू द इंटरनल फ़्लाइट्स विद इन मलेशिया. सो अगर आप मलेशिया जा रहे हो, आई एम अस्यूमिंग यू माइट वांट टू विजिट लंकावी विच इज़ अ वेरी प्रिटी आइलैंड. सो आपको कोलालमपुर से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलती है लंकावी तक का, एंड वहाँ पे और कई सारे जगह है जैसे पेनांग है, एंड देन what other places are there, I'm forgetting the names. ओके सो माउंट किनाबालू है, एंड एक साबा करके एक डिस्ट्रिक्ट है विच आई हैव नॉट विजिटेड दिस टाइम. सो देर आर मेनी अदर प्लेसेस इन मलेशिया जहाँ पे आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हो, एंड इट्स रियली चीप. अगर आप थोड़ा सा एडवांस में बुक करोगे तो मैंने तो 500-600 तक में भी देखा है कि इस फ्लाइट्स की जो फेयर है वो होता है 500 से लेके 700-800 तक का. सो आई बुक्ड अनदर फ्लाइट टू लंकावी फ्रॉम कोलालमपुर, एंड रिटर्न फ्लाइट मैंने बुक नहीं करी. सो एट दैट टाइम आई हैड दिस थॉट कि ओके आई विल विजिट लंकावी फॉर 2 to 3 days and see how it goes, and if I like it there I might extend my stay for 1 or 2 more days, and then I might take a boat or ferry or ship or whatever I will get and come back to Kuala Lumpur via Penang. So I wanted to visit Penang also, but then I had little idea that I will get so tired that I will not be able to extend my stay in Langkawi. And since Langkawi is a very small island, छोटा सा island है, तो 2-3 दिन is like more than sufficient to roam around that place and explore all the things Langkawi has to offer.
तो मेरे को जो रिटर्न फ़्लाइट है लंकावी से लेके कोलंबपुर तक का, वो मैंने लास्ट मोमेंट बुक करी थी। एंड दिस इज़ द रीज़न मेरे को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया था। जो अराउंड 800 रुपये 1000 रुपये में आपको मिलते हैं इंडियन रुपीज़ में, वो मेरे को ऑलमोस्ट 2700, 3 टाइम्स आई हैड टू पे, बिकॉज आई बुकड इट just one day prior to the departure date. So that's how it is. So आप अगर मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हो, आई विल सजेस्ट कि आप पहले फ़्लाइट्स बुक कर लो। एंड जो भी इंटरनल फ़्लाइट्स है वो भी बुक कर लो, क्योंकि वो काफ़ी चीप मिलता है अगर आप थोड़ा सा एडवांस में बुक करते हो तो। एंड देन उसके बाद आप आगे का प्लानिंग करो, क्योंकि बाद में वो एक मेजर कॉस्ट होता है जो एयर फेयर है, और वो आप अगर पहले बुक कर लोगे तो यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट पार्ट। So next part is hotel booking or hostel booking. If you are traveling alone solo like me, तो I will suggest कि आप hostel book करो। hostel बहुत cheap है and it has got everything you need. They have like proper kitchen, they have proper AC and everything that you might need while you are traveling. And since I travel alone most of the time, तो मुझे हॉस्टल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे कंपनी भी मिल जाती है, कुछ नए नए लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी होता है। सो आई गेट टू शेयर माई स्टोरीज, दे शेयर देयर स्टोरीज टू। सो आई डू प्रेफर हॉस्टल ओवर होटल while I travel alone. So for this Malaysia trip, so I booked every hostel from booking.com. आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। आपको पहले से कुछ भी पेमेंट मोस्टली नहीं करना होता है, पेमेंट करना होता है लाइक अराउंड 2-3 days बिफोर you are about to reach that place. So what I do is, मैं पहले हॉस्टल सारे बुक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आई विल नीड दोज डिटेल्स ना, कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ, तो आई नीड टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। सो मैं पहले booking.com से मैंने जो भी जगह मैंने विज़िट करी है 2-3 प्लेसेस मलेशिया में, सो आई बुक ऑल द हॉस्टल्स फर्स्ट एंड आई डिड नॉट पे एनी थिंग एट दैट टाइम। मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नॉट स्क्रीनशॉट, द कंफर्मेशन ईमेल दैट आई रिसीव, मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया फॉर वीज़ा पर्पसेस। एंड देन व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट, मतलब इट वाज डेट, आई हैड टू पे फॉर दैट चार्ज, तो मैंने तब कैंसिल कर दिया, क्योंकि आई वॉजंट श्योर कि मैं किस डेट पे कहाँ पे रहने वाली हूँ, कितने दिन रहने वाली हूँ। हो सकता है कि मैं उसको एक्सटेंड करूँ, हो सकता है कि मैं जितना दिन का प्लान बना के जा रही हूँ मैं रुकूँ नहीं उतने दिन तक। सो आई एम नॉट श्योर राइट कि मेरा प्लान कैसे बनने वाला है, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू कंट्री फॉर मी एंड आई एम गोइंग अलोन। आई डोंट हैव एनी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मी, सो आई कैन change my plans the way it suits me. So I do not pay in advance for hotels, hostels. So I booked them and later on, once the visa was approved, I cancelled all of those and I started booking as I flowed with the trip. So this is what you can do for getting visa. First book all your accommodation on booking.com and hostels आपको काफ़ी सस्ते में मिलती है, लिटरली बहुत सस्ता पड़ा था मुझे hotels। मुझे अराउंड 250 रुपीज़ में लंकावी में इतना सेक्सी हॉस्टल मिला था कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा था लिटरली, द फूड, द एम्बियंस, द amenities, if you talk about. So it was all there and it was very comfortable. It was overall a 10 out of 10 experience. So that's all about hostel. Next, move on to the last part, that is visa. Okay, so next, the last part is visa. So if I talk about visa, इसके पहले I had traveled to Thailand and Maldives. Those were also solo trips. So वहाँ पे ये फैसिलिटी था, वीज़ा ऑन अराइवल, VOA फैसिलिटी अवेलेबल था। तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि मैं अगर फ़्लाइट्स बुक कर लूँगी और उसके बाद मेरे को वीज़ा नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे एंड आई विल लूज़ आउट ऑन माई मनी ऑन एयर फेयर। सो आई हैड दिस फियर in me, because Malaysia does not issue VOA when you are traveling from India. So I had to book the tickets and apply for e-visa. So e-visa was a new concept for me before traveling to this new country. So I thought, okay, I'll give it a try.
So when I researched through it, when I read many articles about it, the VOA, the e-visa stuff, so it isn't that difficult the way it seems. It's not difficult at all. So you need to gather all your things, information first, all your documents first, and once you have them all, you can simply apply for it online. It takes around 30 minutes to fill the form and upload the documents. You need to upload a lot of documents like COVID certificate, and then your flight bookings, and hotel bookings, and all those stuff. So once the form is filled, उसके बाद you need to submit it and pay for it using any credit card. So I used my Citibank credit card, but then here is something I want to share. So जनरली अगर आप नॉर्मल जो जनरल टैब में हम लोग जब कोई भी चार्जेस करते हैं किसी भी वेबसाइट से, सो इजीली गोज थ्रू, राइट? बट देन विद दिस वेबसाइट आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू और what went wrong. So वो चार्ज प्रोसेस हो ही नहीं रहा था. They were not accepting it only. I had all the documents, I had everything in place, my card number was correct, I was putting OTP and everything, but still the charge wasn't going through. So then when I started researching on it, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप इनकॉग्निटो टैब से करो and probably it will go through. So I did try that and it went through just fine, and after 2 to 3 days I got my visa on email. So it's that easy. I will share the link of the visa form in description box, and I will also share a copy of my approved visa on this video, so that you can just have a idea of it, the way it looks. I hope this helps. It cost me around 2,900 rupees for this e-visa. So this is almost it. So I think I have shared most of the information that I wanted to share with you all. But then अगर आप लोगों को इस ये जो भी मैंने डिस्कस किया है इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, कोई कन्फ्यूजन है, एनीथिंग यू वांट टू नो अपार्ट फ्रॉम दिस, just drop a comment in the comment section and I will get back to you if I know, and if I have any link or any reference I would like to help. And I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी. जैसा कि मैंने कहा कि this is the first time I'm doing this, so I'm a little nervous, but then I hope it turned out pretty well. So let me know if you like my video, and I will come back soon with the second part on which I will talk about my first city in Malaysia, which is Melaka, which is an amazing city, and I will talk about it in details. I will share photos and videos and share the tips on how to navigate through the city and more about it. So till then, all of you, please take care and have a good day. Bye bye.